Good afternoon, guys. Are we feeling sleepy? जोश में आ जाइए सब लोग. So, first of all, I would like to thank you all to present here with energy. This is important. Okay. I'm also thankful to all the staff of NFSU who have invited me to perform this act in front of you all. This session is all about startup. What is startup? How you can get into the ambit of startup. Why startup is important for our Indian economy. How you can contribute to the Indian economy by becoming aspirational entrepreneurs. And what extraordinary you can do for you, yourself, for your family, for your country, and for this planet. So, before starting our topic, I have one question for you, all you guys. How many of you know to ride a bicycle? Raise your hand. I need same kind of participation from all the faculties as well, because the people who are sitting just behind you will come in front row in some days or some month or some years. Okay. So how many of you know to ride a bicycle? Almost everyone. Okay. Can anyone raise your hand and give me a process-wise snapshot, or say kind of brief when you started the riding a bicycle? What are the problems and what are the challenges you faces? Anyone? गाइज ये मुझे बताना है, आपस में डिस्कस नहीं करना है. And for the first time when you got your first bicycle, what your parents told to you? Is anyone remind of that message? चला के देख बेटा, हो जाएगा, डर मत, यही सब रहते थे. Startup is all about falling again and again and stand up with all your enthusiasm, all your energy, all your cooperation, all your knowledge, whatever you have. Startup is not a new concept, but आजकल बहुत फेमस हो रखा है सोशल मीडिया पे. जिसको कुछ नहीं करना उसको स्टार्टअप करना है. A person who is not अच्छा, जो मैं बेकार एग्जाम्पल दूंगा वो अपने ऊपर मत ले लेना आप. That example is for someone else. ठीक है, आप अच्छे हैं, सबसे पहले अपने आप को बोलना है आई एम द बेस्ट. ठीक है, मुझसे बेहतर कोई नहीं इस दुनिया में. सो स्टार्टअप जो वर्ड है ये कुछ नया नहीं है आपके लिए और हमारे लिए. बस ये हुआ है कि हम सोशल मीडिया की दौर में हमने क्या किया, बिजनेस को, धंधा को बोल दिया स्टार्टअप. एंड द पेरेंट्स who didn't allow their children to ride a bicycle is now asking from their children, will you go for a startup? तो स्टार्टअप जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है. बिजनेस करना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है. ठीक है, खट्टा मीठा टॉफ़ी खाया आप लोगों ने? स्वीट एंड बिटर. कभी मीठा लगता है, कभी खट्टा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है. ओके, सो startup is not a new concept for us.
From year 2016, we used to call it a simple business. If someone has interest in building his own company, someone has believed that he can do something for society, someone has believed that he can generate the employment for the nation, he chooses to become an entrepreneur. But is this journey is so easy, do you think? लंच लगता है सबने हैवी किया है कि नहीं? Have you imagined a day without your mobile phone? Can you imagine a day without internet? Yes? Okay, great. Can you imagine without a day without studying? Yes. I was expecting this answer, and this answer shows you that you all have courage to become a good entrepreneur. दुनिया को हटकर चाहिए, एक जैसा नहीं चाहिए, ठीक है? पहले क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और अब क्या हो रहा है? अब मैं I will take the example from your real life and will show you how the people are making money from your livelihood, from your day-to-day activities. क्या कभी आपने सोचा था कि बारिश हो रही है और घर में बैठे बैठे हम बाहर से पकोड़े मंगाएंगे? सोचा था? या मम्मी के पैर पड़ने होते थे बस? और जिनकी शादी हो गई लाइक मी, उनको अपनी बीवी के सामने नाचना होता था कि यार पकोड़े बनाओ। आज क्या ऑप्शन है आपके पास में? व्हाट ऑप्शन वी हैव? स्विगी, जोमेटो। क्या आप इन्हें बोलेंगे? अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि इस फील्ड में कंपटीशन नहीं है या बहुत ज़्यादा है तो हम नहीं आएंगे इस फील्ड में। मेरा ये मानना है, और इस दुनिया के ज़्यादातर जो इंसान हैं जो बिलीव करते हैं खुद में, उनका ये मानना है कि जिस भी फील्ड में आपको लगता है कि कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमेशा ज़्यादा होती है। अगर जोमेटो ने ये सोचा, जोमेटो आया तो स्विगी वाले ने सोचा होता कि अरे यार जोमेटो आ गया, काम ख़त्म है। आप देखोगे इन गोवा इटसेल्फ देयर मे बी 10-15 स्टार्टअप्स जो कि आपकी फूड डिलीवरी को चलाते होंगे। ओला आया तो लोग बोलते थे ऊबर कौन यूज़ करेगा। आपके गोवा में भी एक स्टार्टअप है विच इज़ फॉर टैक्सी सर्विसेज। ओके, हम और आपके जो एस्टीम इंस्टीट्यूशन है ये आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप कुछ अपने लिए करो। अच्छा, अपने लिए जब इंसान करता है ना तो देश के लिए अपने आप कर देता है। If you want to make yourself proud, think and think. पहला स्टेप क्या है? सोचिए। बहुत लोग सोच नहीं पाते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि अरे मुझे तो ये करना ही नहीं है। 9 to 6 की नौकरी करनी है, घर जाना है, बच्चे के साथ खेलना है और बस सो जाना है, ठीक है? If you want a life which is full of up and down, full of energy, full of challenges, become an entrepreneur. आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलते होंगे यार तेरे भाई से बढ़ के तो कोई नहीं है, तेरा भाई चैम्प है। बोलते हैं बहुत लोग। इवन यू विल ऑल्सो फील यार ये लड़का तो बहुत डैम बढ़िया बच्चा है, अच्छा है, सब कुछ इसे आता है। लड़कियों के साथ ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। शी इज़ बेटर देन मी, बट वन डे व्हेन यू विल बिकम सक्सेसफुल
you will become a good entrepreneur, you will become a good leader. The mass, the people will follow you. आप गलत भी करोगे ना तब भी आपको फॉलो करेंगे, लेकिन गलत को फॉलो नहीं करना है. How many of you are wearing zigzag jeans right here? Zigzag jeans. Zigzag in the sense आपका रफ जीन्स बोल सकते हैं. दिल्ली में zigzag बोलते हैं रफ जीन्स. वो होता नहीं है कि फटा हुआ कपड़ा होता है ऐसा कुछ. How many of you? Okay. क्या आपके पेरेंट्स या इवन अगर मैं ऐसा कुछ वियर करता है तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये क्या पहन लिया है, घर का नाक कटवाएगा क्या? और जब वही ड्रेस जब सलमान खान पहन के स्टेज पे हिट करता है तो उसको दुनिया फॉलो करती है और बोलती क्या है कि सलमान खान ने पहना, मैं भी लेकर आऊंगा. Are you following the Salman Khan as a human being? No. You are following his identity, जो वो बन चुका है. So always make your character in such a way the people will follow your character. So मैं बीच बीच में आपसे सवाल भी पूछूंगा, ठीक है? There must be a two-way communication between me and you guys. Okay? We will start the session. After the session, we will have a 10 to 15 minute session for F&Q round. If you have any queries or any doubt, you can consult. Okay? And after the session as well, you can consult me through your MIRC or any of your faculty member. Okay? Let's start. Guys, I believe and I trust you all that at least 99% of people out of you guys will become good entrepreneurs. And if you support me on my statement, so get fully engaged to the workshop which is organized by your faculty member in your university. Also, I will show you some real life examples which are surrounded by us. Okay? Also, they are making good money out of our livelihood, and they have become more and more successful by only following the need of our people. Okay? So, startup a roadmap to entrepreneurship. Startup, अगर हम बात करें, startup is all about, the word simply means start and up. Once you are into a business, once you have make a plan, once you have decided कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नया बनाना है, अगर आपने सोच लिया तो पैर पीछे मत खींचिए उससे. ठीक है? Startup is all about how you think about addressing any of the issue, any of the challenges, and always think that you are a customer. Always think from the point of a customer. Because if a person can fulfill his dreams, his need, can become a good entrepreneur. आपको मान लीजिए
कहीं ट्रिप पे जाना है एंड यू वेंट टू योर पेरेंट्स एंड आस्किंग फॉर मनी। अब आपके पास कितने बहाने होते हैं, पापा इस बार सेमेस्टर में देखना मैं लंका लगा दूंगा, इस बार का जो सेमेस्टर होगा उसमें मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, कॉलेज लेवल पे मेरा नाम आने वाला है। पापा कन्विंस नहीं होते, बोलते हैं तेरा हर बार का ऐसा ही है, फेल हो गया जाता है, बैक लेकर आता है। और जब भी बैक आती है तो मुझे क्या बोलते हैं कि मेरे साथ बाकी दोस्त भी हो गए। आप जो टॉपर है उसके बारे में नहीं बताते हो, लेकिन जो फेल हुआ है उसको आप साथ में रखते हो कि यार ये बंदा काम का है। होता नहीं है कि जब क्लासरूम में आप एक को डांट पड़ रही होती है तो दूसरा पर्सन क्या सोचता है कि यार मुझे भी डांट चाहिए और इसको साथ में खींच लो। ये भी था सर मेरे साथ। सो मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों दिया, अ पर्सन हु वांट टू बिकम एंड गुड एंटरप्रेन्योर शुड नो एंड शुड लर्न हाउ टू टेक पीपल विद हिम। आपको एसोसिएशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। आप गूगल ग्रुप्स बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं कि आर दोज पीपल आर विलिंग टू कम विद यू to start a journey which can change your life, change the life of millions of people of India, and also change the atmosphere of the ecosystem in which we are living. Always think beyond the line which is drawn by your society, especially for the girls I am talking. Think, learn, apply, and judge. Do not allow someone to judge you. Become your own judge your own life. सबको मालूम है कि आपके पास एक जज है, वो है आपकी आत्मा, आपका दिल। वो जानता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। उसको कहने दो, दिल की बात कहने दो, क्या चाहिए उसे। और जब आप अपने मन की सुनते हो, क्योंकि मन आपको क्या बोलता है कि तू इसमें अच्छा है। अगर विराट कोहली ने सोचा होता है कि यार मुझे तो छोले भटूरे की दुकान खोलनी है, तो क्या उसकी इतनी फैन फॉलोइंग होती है आज की डेट में? नहीं होती, ठीक है। लेट्स मूव। द फर्स्ट स्लाइड विच इज परिचय। परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। सो स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप वर्ड हैज सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट वन इज, स्टार्टअप का मतलब ये है देयर विल बी लेसर रिसोर्सेज इन योर हैंड, in terms of people, in terms of money, in terms of product, in terms of market size, and in terms of vision as well. If you Google at any time how and what is required to start a startup, there will be millions of pages which will tell you that these are the formalities and these are the things you need to do to form a startup. But nobody will tell you that you should not do these kind of acts while going through your journey for this entrepreneurship. Dear, startup is not something कि आपने किसी से सुना और आपने अप्लाई कर दिया। This should come from your inner side. You should address the challenges. You should know who can fulfill this challenge. What are the ways we can bring down these challenges into opportunities. I have given the example of Zomato, Ola Cabs. One of the beautiful example is 1mg net MID. कभी आपने सोचा था कि दवाई आपके घर पे आ जाएगी? डॉक्टर नहीं आते थे, दवाई आ रही है आज की डेट में घर पे। Become technologically sound. Technology play a very important role
for any startup and to address and hear the mass voices. So a startup is something, a newly established company which is formed by a small team of founders. यहाँ टीम स्मॉल है लेकिन विजन बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. They have limited resources, but they are focusing on and developing on bringing a unique product. My chase is on this point. जरूरी नहीं है कि आप यूनिक प्रोडक्ट लेकर आए. There can be a product which is already in the market, but what different you have bring is matters. Startup India are generally known for its innovative and disruptive approach to solve the problems. I rather say problems, I would say challenges. There are many types of startups which are technology related, digital innovation. They can be biotech, fintech, clean energy. So in startup you need 4 and 5 basic traits which a person should have if he or she wants to become a good entrepreneur. First, thinking. सोच लानी पड़ेगी आपको. कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, आपने वो पढ़ा नहीं है. मैं भी अपने टाइम में करता था. मैं क्या करता था, उसमें बोलता था यार इसको छोड़ना नहीं है, कुछ तो लिख दे. जो हमें आता है 10-15 लाइनें जो हमने किसी और क्वेश्चन के लिए पढ़ा था वो हम लिख देते हैं उसके अंदर. सो थिंकिंग मस्ट बी देयर. Now the second point will be what qualities you can bring, what product, what kind of services you can bring, which can address the challenge which is pointed out by you or the society or the country. The next slide. This depicts the startup company characteristics. The first point जो कि छुप गया अंदर ही है, इनोवेशन. इनोवेशन हमेशा छुपा हुआ होता है. हाई ग्रोथ पोटेंशियल. Don't look at any brand, don't think this startup will fail in 1 year or 2 years. Entrepreneur who is willing to become an entrepreneur, a person who is willing to become an entrepreneur, a person who is willing to become a successful entrepreneur knows where he has to go. Scalability. किसी ने सोचा था, have you ever imagined that Zomato, Ola Cabs, AI related industries will boom like this? The person who completed their graduation, who completed their schooling and colleges, they were thinking to join a company, to have a 9 to 6 job, to have a dream of making fun, having fun on weekends. They left their job, they left the good companies at good prices, at good salary, and they joined their startups. They start their startups. There were even their family members was thinking कि क्या कर रहा है तू, क्यों छोड़ रहा है, अच्छी नौकरी है, लाख रुपए की सैलरी, अच्छी जगह शादी भी हो जाएगी तेरी. आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो वहाँ पर क्या है ना, पैसा बहुत देखा जाता है. आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो वहाँ पैसा बहुत देखा जाता है कि पैसा है तभी लड़के की अच्छी शादी होगी. आप जाके बोले कि मेरे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, मेरे बियर्ड बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, कोई नहीं पूछता आपको पैसा कितना है आपके पास में. ओके, सो दे स्टार्टेड देयर जर्नी.
अच्छा, जो स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी एक बहुत खास बात क्या है जो हमें उनसे सीखनी चाहिए? दे नो A to Z फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस, A to Z। क्यों? क्योंकि दे आर द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ देयर कंपनी, पहले एम्प्लॉय वो होते हैं और सबसे टॉप पे लास्ट में वही पहुंचते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी भी फील्ड में चैंपियन बनना है तो आपको बिगनर होना पड़ेगा। विदाउट बिकमिंग अ बिगनर यू कैन नॉट बिकम अ चैंपियन। ठीक है, हमेशा आप देखिए कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या मुझे लेकर जाना है आगे, क्या मैसेज कन्वे करना, वो इम्पोर्टेंट रखता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट characteristics of a startup company is customer focus. There are multiple brands which have segmented their customer on the basis of their product fix, market fix. One of the beautiful example, आजकल जो एयरपोर्ट चलते हैं, सब लोग एयरपोर्ट के ज़माने में आ गए हैं। पहले लंबी तार वाली हुआ करती थी हेडफोन, सबके पास होती थी, बट किसी ने तो उसकी नीड समझी ना, किसी ने जाना कि इसकी ज़रूरत है। अब कोई सोचेगा ऑलरेडी मार्केट, देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स हु आर ऑफरिंग द हेडफोन्स, बट व्हाई बोट इज इमर्जिंग? बोट, डू यू नो अबाउट द बोट ब्रांड? The China was the eminent player in offering these kind of products. लेकिन दिल्ली से एक लड़का निकलता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारी फर्टिनिटी का बंदा, जो बोलता है कि मैं एक ऐसा ब्रांड बनाऊंगा इंडिया के अंदर जो रीजनेबल भी होगा, अच्छा भी होगा और मैं इसको कस्टमर्स तक पहुंचाऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू वॉच शार्क टैंक इंडिया शो? The point is, Shark Tank India में आप देखते हो, there are new entrepreneurs from different parts of our country. They come, they pitch their details, they pitch their about company, what product they are making, what is the size of their business, and they ask for the investment. But how good have you observed the judges? They are promoting their business as well. अमन गुप्ता अपने हाथों में अपने वॉच को पहनता है. Who wear the watch in their hand in this part? From starting a scratch from zero to building a more than 5,000 crore company, boat is not an easier task. But this has happened because he know what is the requirement of the customer. His product has got fixed into the right spot. Do not think that already there are multiple products in the market. If your product is genuine, if your product is more innovative, the sky is the limit. There are multiple brands, but still the brands are emerging. They are becoming famous day by day. One of the point, culture. This is most important point in the life of journey to become a good entrepreneur. What culture you follow? Culture starts from the family from you are coming, the society from you are coming, the people, group of people, the mass you are representing. Culture is what? आप अपने घर में भी सुनते होंगे,
आपके अगर पेरेंट्स काम करते हो, किसी चीज़ का जॉब करते हो, बोलते हैं कि यार मेरी कंपनी में अच्छा कल्चर नहीं है। हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि यार यहाँ पर अच्छा कल्चर नहीं है। Who are building this culture? You people and I. We are building this culture. So, if a company knows where and what kind of culture he has to apply, they go for it. They know that customer is always go with their comfort. जैसे अभी रिसेंटली में राखी का त्यौहार गया है, राखी आपने देखा होगा कैडबरी की एडवर्टीजमेंट आ जाती है। एवरी ईयर दे ब्रिंग समथिंग न्यू। इस साल क्या नया लेकर आए वो? इस साल दे हैव हायर्ड द सेलिब्रिटीज वेयर you can get the customized messages for your loved ones. Okay. Although Cadbury do not need any kind of recognition, it's already an established brand. But why it is devoting, making R&D on its product, on its marketing? Because of its culture. Culture क्या? मिठास देना. This is the culture of Cadbury brand. Okay? If you want to become good entrepreneur, you must be a good leader. Leadership and entrepreneurship go hand by hand. Because while leadership is important, at last चाहे आप एक बिस्किट का पैकेट बना रहे हो या आप कोई बहुत महंगी शूज़ बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, अल्टीमेटली यू हैव टू रीच द कस्टमर, द एंड यूज़र। एंड एंड यूज़र तक पहुंचना, अपने मार्केट को फिक्स करना आसान नहीं है। सो entrepreneurship and leadership skills go hand by hand. To become a good leader, what is important? Always listen first. सोचना और सुनना बहुत ज़रूरी है। There are many people who do not love to listen. They only want to speak. Always listen first. A good leader listens. Open mindedness होनी चाहिए. If suppose मुकेश अंबानी जी बैठे हुए अपने कैबिन में और उनका एम्प्लॉय आता है, सर आई हैव अ सजेशन फॉर यू, वो बोलते हैं अरे मुझे नहीं सुनना, आई हैव अ गुड टीम, गुड MBA पास आउट टीम फ्रॉम IIM अहमदाबाद, आई विल लिसन टू देम ओनली। क्या ये ओपन माइंडनेस है? नहीं है। क्या पता कोई आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाए, क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए आपको जो शायद गुड MBA स्टूडेंट्स ना दे पाए। ओके, सो ऑलवेज बी ओपन टू ऑल। चैलेंजेस भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। नाउ फ्रॉम हियर आवर स्लाइड्स will get into more deeper. What is the position of startup ecosystem in India? How Indian government is helping you? What are the benefits you can get from the Indian government? Apart from Indian government, even the world leaders are also helping the startups. If the world leaders think this product will change the ecosystem, change the lifestyle of the mass people, they invest. So, अच्छा, आप लोगों को लगता है कि इंडिया स्टार्टअप इंडिया के मामले में, इकोसिस्टम के मामले में किस पोजीशन पे होगा? This is my privilege and also I feel proud
tell you all that India has emerged as the third largest startup ecosystem in the world. It's a big achievement. And in next 1 or 2 years, we will be the second largest startup ecosystem. अब startup ecosystem है क्या? Suppose I have to build a shop. I have to build a shop and the shop is for momos. Momos यहाँ चलता है गोवा में? Momos नहीं चलता. What is the famous snack here? Snack dish. Okay. So जो बड़ा पाव, okay. To open a vada pav shop, what are the details or what are the things a person should perform to open a good vada pav shop? So from day one, उनको क्या करना है? एक बढ़िया सा लोकेशन फिक्स करना है. He will hire the good people. He will get a good brand name. He will get the licenses from the authority. He will decorum the room, the place in such a way which will attract the people. He will also put some offers like with one vada pav you will get one mirch free. Okay, so these are the things which makes overall ecosystem for a startup. So India has emerged as the third largest startup ecosystem in the world, and you guys will surprise, more than 110 startups unicorn are from India. Unicorn आप जिसे समझेंगे, which are the brands which is more than 5,000 crores. 5,000 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 5,000 करोड़. शायद अगर लिखने बैठेंगे तो सुनने की गलती हो जाएगी, जीरो की गलती हो जाएगी. How many zeros will be there? Okay. Segment wise, e-commerce and technology related startups are very famous in India. Out of 100 startups or say 10 startups, 4 to 6 startups are related with technology and e-commerce. Apart from those, there are fintech related, healthcare related, EV startups are there. If you guys can see, there is a word DPIIT. The person who is sitting right here want to become an entrepreneur. ये शब्द आपके लिए बहुत important है, DPIIT, because this is the department which grant you the certificate of startup. Startup India के लिए आपको certificate जो मिलता है वो DPIIT से मिलता है. हम उस पे आएंगे, what are the documents you need, but the Department for Promotion of Industry and Internal Trade grants you the certificate for Startup India. हमेशा से ये देखा गया है कि इंडिया is known for its innovation. You travel across the world, whatever you will see, there must be some link which are directly or indirectly linked to the India. India is known for its innovation. If you visit US Silicon Valley and every 5 out of 10 people are Indians. But due to some circumstances, our talent gets shifted from India to some other countries. But from last couple of years, with immense support of Indian government as well as the society,
as well as the parents, as well as your friend circle, and the most credited person is social media, are keeping and bringing the technology as well as the people who left India due to its mismanagement, poor management, to India back. Now, many of the people, many of the entrepreneurs, you will see, they were doing something else out of India, in US, Canada or somewhere, but they have returned to India. Like, because India is changing, or I would say the right word is India is emerging as a leader of this world. So, 1 in 5 adults, and this number has grown, I would say 3 out of 5 in India, adults want to start their own business. पूरी दुनिया ने कोविड को एक महामारी के रूप में देखा. कोविड वॉज अ डिजास्टर फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट फॉर इंडिया there were casualties in India as well, but the COVID period has emerged one of the golden period for Indian economy. सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सबने कंपनियों के काम को छोड़ा, बोला अपना कुछ बनाते हैं. कंपनियों का बेड़ा गर्क हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है, अपना कुछ बनाते हैं. So from year 2021, the level of startup registration, the company formation, the business formation has grown up immensely. The future of entrepreneurship in India looks very promising because we have a good government at center, and in Goa itself, there are people who are ready to provide you grant, provide you the financial support to start your own venture. We have many ecosystem developed at national as well as regional level itself to support you to build up your business as well as to build up your ecosystem which can help out our society as well as our country. I don't know what went wrong to this PPT because it was opening in good shape here at my office. No issues. So we have already discussed what kind of different kinds of startup business are there. I will look. Now this page is important. Startup contribution to Indian economy. You do a job, you are making your family happy, taking care of your family happily, but it becomes more happier if you offer a job to other families. अपने घर में दिया जलाना बहुत अच्छी बात है, but 10 घरों में दिया जलाना, 10 घरों का टेक केयर करना, उससे भी अच्छी बात है. So if you are a person who is creating a job, offering a job to other people, it's a kind of culture which India is expecting from its youth. जॉब करना, जॉब देना बहुत फर्क है. आप देखते होंगे कि दिवाली फेस्टिवल है, आप देखते हो कि आपके पड़ोस में एक पर्सन के यहाँ कोई मिठाई देने नहीं गया है, आप खुद जाके उसके यहाँ मिठाई देते हो, स्वीट्स देते हो, आप और उन्हें बोलते हो कि यार हमारे घर में दिवाली है, आपके अंदर आपके घर में भी हम खुशियाँ बांटने आए हैं. When you think you can make
the people happier together, this also makes you a good person as well as a good leader. So, till now, these numbers are hypothetical. Indian startups has added 50 million jobs to the Indian ecosystem, employment ecosystem, which is a big achievement for us. The startups are looking to add at least $1 trillion revenue to the Indian economy by the year end of 2030. At present, the government is aiming to become the third largest economy in the world. That dream is possible only by the channels which will offer a good ecosystem for startups in India. Because for the last many years, we were seen only as an agriculturalist economy. But now the time has changed. The world is looking at us. The world is associated with us like it's an era of India. And by 2030, we are expecting that 7 trillion economy size of India will give goosebumps to all of us. What are the milestones the startups have achieved during its journey from year 2022 to 2025, the aspirational year? There are many schemes which is launched by the Indian government. One of these, Aspire, a scheme for promotion of innovation, rural industries and entrepreneurship. For our startups, the biggest problem was the money problem, the capital. Suppose a person have good idea to build something new, but he is lacking in revenue terms. So there are many initiatives which have been initiated by the Indian government as well as the private institutions who offer the capital grant in form of loan, debt, equity split, as well as investment in the form of venture capital. So India has evolved from मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ 2004-05 की, जब आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर बीपीओ का कंसेप्ट आया था, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. What the major countries were doing, they were like making the India economy only a service provider. Like they were on the point, they give the process to Indian companies. Because in India there is a cheap labor. Labor is very much cheaper in India in terms of other countries. But from that era, we are changing to an era where we are hiring the people from across the world. If you visit any of the corporate park, IT park, you will see many people are working who are from different countries. So, as said earlier, if you have courage to become a good entrepreneur, you are not setting a remarkable achievement for your country, but also for the world. And the world is watching India. So, this is the Startup India scheme. Startup India scheme was launched in 2016 by the central government. The primary aim of Startup India scheme is to cultivate a thriving startup ecosystem, positioning India as a global leader. आप सब जानते हैं, our Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी सबसे पावरफुल आदमी है. His popularity is gaining day by day. He is the most loved
leader at present time. So the Startup India also aims at positioning India as a global leader in terms of innovation. So there is a process to gain access to the benefits of a Startup India scheme. This is the process. If you want to become a startup in India, first of all, the first step is to build your business, incorporate your business. अच्छा, बिजनेस जो है वो ऑन पेपर होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि द बिजनेस आइडिया इज इन योर माइंड और आप चले गए डिपार्टमेंट DPIIT के पास कि मुझे स्टार्टअप का सर्टिफिकेट दीजिए, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है. वो बोलेंगे सर्टिफिकेट कहाँ है. आपको मालूम है ना कि आप अगर आपका नाम XYZ है तो उसकी पहचान मैं कैसे करूँगा. आपके पास पैन कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए. सो for Startup India registration process, the first and utmost process is to incorporate your business. Now, what are the types of businesses you can incorporate at present India scenario? You can build up a private limited company, a partnership firm, a limited liability partnership. For this, for private limited company, for LLP, you have to approach the Ministry of Corporate Affairs. There are some procedurals which need to be followed for getting the registration. Once your business is registered, you can approach the DPIIT website for registering with the Startup India. So सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपना बिजनेस बनाना है. The business firm can be anything. Either it can be partnership firm, it can be LLP, limited liability partnership. It can be a private limited company. It can be a public limited company as well. Once you approach the DPIIT department, they will ask some of the information from your side, like your registration certificate, where your business is located, and all. We will cover those points in our next slide. Once you approach the DPIIT website and making all the formalities, you will get your Startup India recognition number, which is your Startup India number. Once you have this certificate, you can enroll yourself with all such schemes and services which are allowed to the registered Startup India. So do not get confused with if you have incorporated a private limited company, you will come under the ambit of Startup India. No. Building a private limited company, incorporating a private limited company is just like you have incorporated your business. In order to get the benefits of Startup India scheme, you need to get registered yourself with the Startup India DPIIT website. So eligibility criteria for the Startup India. I'm extremely sorry, my slides are up and down. I'm not sure why this has happened. First is business structure. Just discussed earlier. The startup must be incorporated as a private limited company or LLP or partnership firm. दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है? एज ऑफ द स्टार्टअप. इफ योर कंपनी इज लेस देन अ टेन्योर ऑफ 15 years, you are eligible for an startup registration. For maximum company, it's 10 years. But if you are in the field of biotechnology sector, it's 15 years.
your company revenue must be below 100 CR in an फिजिकल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। सपोज कीजिए आपकी कंपनी को 5 साल हुए हैं और 5 साल में उसने 100 करोड़ से कम का धंधा किया है, तो यू आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ स्टार्टअप इंडिया। यू मस्ट हैव द इनोवेटिव अप्रोच। जस्ट डिस्कस्ड couple of minutes ago, what innovation, what changes, what new methodology you are bringing to the existing as well as new product and services will help you to get Startup India registration certificate. Again, the DPIIT recognition. There are some legal compliances which a company need to follow, which is related to the income tax, GST. You must have heard about GST, the company's law. Again, the last point is very important. When you will approach the DPIIT website for getting the registration of your company, your partnership firm, they will ask you to jot down what are the steps and what are the plans you have which will help in creating the job ecosystem in our country, because government is focusing on the ventures which will help us out to create the jobs, because employment is the biggest challenge in our country. What are the benefits provided under the Startup India scheme? बहुत फायदे हैं इसके। First one is you will get benefits in registering your trademark, patent as well as copyrights. Trademark समझते हैं आप लोग क्या होता है? Anyone? ट्रेडमार्क, सपोज कीजिए कि आपने सोचा कि मुझे एक ब्रांड बनाना है शूज़ का, और आपने अपने शूज़ की कंपनी का नाम रख दिया नाइकी। इज इट पॉसिबल यू कैन कॉपी दिस नेम? सो इन इंडिया देयर इज एन अथॉरिटी, IPR अथॉरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वेयर यू कैन गेट योर वर्ड as well as your wordings, audio, video registered in name of yours. There are certain formalities which need to be followed, and once the government is satisfied, there is a process, long-term process. They will grant you a registration certificate which will embark you the real honor of that brand. How many of you watch news on daily basis? Any platform, social media, TV, newspaper, any. Have you heard about the news that there was a brand Burger King? सुना है आप लोगों ने? One of the beautiful example of trademark. ट्रेडमार्क के अंदर होता है क्या है कि जिसके पहले दावेदारी उसका नाम है। The judgment was ordered in the favor of the person who is from India, because he applied for the trademark registration, brand registration, before the application of Burger King, which is US based. So if you want to become a good entrepreneur, always respect your brand. Brand should be catchy, brand should be unique, और brand ऐसा होना चाहिए जो लोगों के मन में बस जाए। ऐसा क्यों होता है कि जब when you visit a shop, like आप मंच खाते हैं या फिर डेयरी मिल्क खाते हैं, आपके नाम में वो बसा हुआ है, माइंड में बसा हुआ है कि मुझे यही ब्रांड चाहिए बस। Also you refer someone कि आपको यही लेकर आना है। तो ब्रांड क्या है? ब्रांड एक ऐसा शब्द है जो आपके दिमाग में बस गया है, which is the intellectual property of a parent company, which no one can copy,
No one can alter as well. So brand is बहुत important. So if you are in startup and if you want to register your brand name, your any of the working or wordings, you will get the benefit in terms of fees, government fees. Like if you are in Startup India registered member, and if you are applying for the trademark registration, you will get the concession in fees. Like if the fees is for 10,000, you will get the benefit of 8,000 exemption, 5,000 exemption, like that. So second point is funding support. There are many venture capitalists, there are many industrialists who are sitting in their office. The people from across the India build their project report, like we have idea to build up this industry or this company. They get the appointment with those people for funding, क्योंकि पैसा तो चाहिए, काम करना है आपको तो. In the last 4 to 5 years, only the startups in India have gone the गवर्नमेंट फंड्स ऑफ अराउंड 2500 crores. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बाहर भी जाके वहाँ से भी फंड्स लेकर आते हैं. जो सरकार पहले सोचती थी या हम सोचते थे कि ये पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से क्या होगा, बिजनेस को हम मजाक समझते थे. हम सोचते थे बिजनेस करना इसे बहुत बहुत बड़ी डील है, नहीं हो पाएगा ये. बट नाउ इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया, गुड प्रोडक्ट, गुड विजन, यू विल गेट द फंड सपोर्ट. Even banks are helping, financial institutions are helping. There are many industrialists who have even opened a dedicated team as well as dedicated companies to help the new and innovative entrepreneurs. You will also get benefits in getting the certifications. Like opening a company is not a easier task. There are many compliances, many legal formalities you need to be followed. One is at central level, because we are living in a country which has dual form of government. The central government has their own set of rules, so they will imply you at central level. In the state where you are opening your business will also attract some state laws. Post state laws, there will be some legal formalities which will be applied on the basis of your local authorities, like related to your municipality, your fire department, your water department, NSCs and all. You will also get some environment related act exemption, like you will get the pollution control board certification exemption, tax exemption, public procurement names exemptions. Now what are the documents required for Startup India registration? Just told earlier, you must register your company first. Company incorporation or registration certificate. Proof of funding. This is applicable for only those who having the funding support. Okay. Authorization letter. This again a document which will be made by the company. Proof of concept, your website link and something. Patent and your PAN number. Now see. Top 10 countries by the number of startups. आप देख रहे हो, अब इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया है. हमसे ऊपर USA है. So this is a big achievement for us, not for Indian government, as well as for all the citizens of India who believe that India is going to be a world leader in some time. In your right side, you will see the
distribution of startup. Which startup distribution, which startup contribution is more? So fintech related, life sciences related, AI related, startups are famous nowadays because all are based on technology. So understand the technology need of your startup. See, this is the 5 fastest growing startup industries by volume of investment. इन्वेस्टमेंट भी अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंडस्ट्री के पास चले गए और बोले कि मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो, क्या करना है तो मुझे गोवा में छुट्टी मना के आना है, नहीं देंगे आपको। शार्क टैंक इंडिया में देखते हो सबको फंडिंग नहीं मिलती है। द बिजनेसेस हु हैव गुड आइडिया, द बिजनेसेस हु हैव गुड नंबर्स get the funding support. What are the challenges you will face when you en route your car to the startup? First you will face the competition. लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कंपटीशन है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। कैश फ्लो, देयर आर मैनी स्टार्टअप्स दे आर बर्निंग देयर कैश, लॉस में रहते हैं स्टार्टिंग से ही। अगेन मैं रिसेंट न्यूज़ से आपको निकाल के आ रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी 2 दिन पहले ही न्यूज़ आया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 to 10 years ओयो जानते हैं सब लोग, ओयो रितेश अग्रवाल हैव रिपोर्टेड देयर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर विद पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ। इससे पहले लॉस मेकिंग थी। लॉस मेकिंग क्यों होती है? उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। लॉस मेकिंग के पीछे आपका हो सकता है रीज़न कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आपके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अच्छे से फिट नहीं हुए हैं। देयर कैन बी इनॉर्मस फैक्टर्स फॉर योर लॉस मेकिंग कंपनी। नाउ सी, इसमें से कितने ब्रांड्स हैं जो आप लोग जानते हैं? These brands are helping your livelihood, ठीक है? ये ब्रांड्स आपके बीच से ही निकले हैं। द पीपल बिहाइंड दिस ब्रांड्स वर ऑल्सो सिटिंग समवेयर समडे लाइक यू। सो इफ एनी ऑफ यू और ऑल ऑफ यू वांट टू पुट योर ब्रांड हियर, जस्ट लंबी सांस लीजिए और एक ताली बजाइए अपने लिए। क्लैप फॉर योर सेल्फ। इट्स अ टॉप 102 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन इंडिया, जो इंडिया से स्टार्ट हुआ और जो विदेशों में भी इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री। माई नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर द पर्सन टू whom I have personally met. इनमें से कितनों को आपने देखा है? The founder of OYO, Ritesh Agrawal, a college guy जो यूएस में जाते हैं, विजिट्स यूएस ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज, और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर कैप्सूल होटल्स का कंसेप्ट है। दैट टाइम इन इंडिया देयर वर द होटल्स which were not affordable for many of the people.
and mainly for the students. Suppose you have to travel to Mumbai for any of exams, but you cannot board a good hotel room. लड़कों को स्टेशन पे ना सोना पड़े, बस स्टेशन पे ना सोना पड़े, because everyone have their own financial strength, everyone have their own financial background. So he is think, can I build up a ecosystem in the hotel industry which can offer the room-based services and the separate room-based services to the mass people below a cost of 2000. और वो ओयो ने करके दिखाया आपके सामने. Dipinder Goyal, an engineer by profession, but what he is doing? He is delivering the goods, not he, his team. So either make a good product, address a good service, or become a good aggregator. जोमेटो जो है ना, उसने अभी प्रोसेसिंग फीस बढ़ा दी है अपनी, प्लेटफॉर्म फीस. किसको दुख है सबसे ज़्यादा? कितना है आज की डेट में इन गोवा? नहीं देखते? How many of girls use brand Mamaearth? Which brand? Which brand product? Nykaa? Okay. Flipkart. How many of you use Flipkart? Only Amazon. The Flipkart was initially known for only books, but it has emerged as the second largest e-commerce platform in India after Amazon. Now next is, see, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अच्छा टाइम कभी नहीं आएगा, यही सबसे अच्छा समय है. So any time is a good time to start a company. Don't wait. If there is something in your mind, you think you have some inputs in your mind, you have some innovation in your mind, go for it. Either you will win or you will learn. जो भागा नहीं उसको रेस का पार्टिसिपेंट नहीं माना जाता है. The big secret in life is that there is no big secret. अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है. हमने बहुत बातें की, हमें ये चाहिए वो चाहिए. Nowadays, if you have मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं. शॉर्ट्स बनाते हैं लोग, पॉडकास्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं. हाउ मैनी ऑफ यू आर मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? कितने घंटे देते हैं आप लोग एटलीस्ट इन अ डे? ये वीडियो आप लोगों ने अभी बहुत देखा होगा, कुछ समय से आ रही है, पिछले 2-3 दिनों से.
again. Fail again. Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better. The world is yours. Treat everyone kindly and light up the night. One more time, this video is very energetic. Hardly there are 4 to 5 words he is saying, but those 4 and 5 words can change anyone's life. Please दिल पे हाथ रखिए और इसको सुनिए. जो भी करना हो आपको, नौकरी करनी हो, बिजनेस करना हो, एंटरप्रेन्योर बनना हो, क्रिकेटर बनना हो, डांसर बनना हो, कुछ भी बनना हो, दिस वीडियो फिर इज फॉर यू. Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better. The world is yours. Treat everyone kindly and light up the night. At last, I would say you guys were awesome audience. Let's clap for yourself. Let's clap for your future. Clap for your faculty. And at last, clap for your country. मेरा मैसेज आप लोग के लिए यही है कि आप इस देश की युवा शक्ति हैं. देश को बदलिए. देश को आपकी ज़रूरत है. इंडिया नीड्स यू. दिस कंट्री नीड्स यू. दिस कंट्री नीड्स द पीपल लाइक यू. आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है. मेक योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर सोसाइटी एंड कंट्री प्राउड. ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू. Thank you. Hello? 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 Thank you so much, sir, for your insightful inputs. Ladies and gentlemen, as we conclude this workshop, I would like to extend our sincere thanks to Mr. Neeraj Kumar Jha for sharing his expertise with us today. Your insights into corporate governance and legal compliance have been truly enlightening. We would also like to extend our heartfelt thanks to Dr. Lucky. I would now like to invite Mr. Neeraj Kumar Jha once again for a question-answer round. Let's give it up for him, guys.